take this session, or I would say, do this satsang early in the morning. Now, why we are doing this session, what is the objective of this session, and how we are going to proceed is something which I'm going to sort of share with you. Uh, the structure is going to be something like this. Initially, I'm going to take, let's say, about 15-20 minutes. There are some slides that I have prepared. And in the meanwhile, as we sort of proceed, I would request if you can have a pen and a paper. We are not going to do any kind of, let's say, poll or surveys, but these are questions of self-reflection. So if you can even note it down and sort of mull over it, even later on, that would greatly help. And then in the third part, we will take some Q&A. The whole session will try and do it between 45 minutes to 60 minutes max. In case someone has questions, I would suggest we keep it for the later part, right? So without much ado, we start. And before I start, I once again really want to thank each and every member who have coordinated this session. It's been for me a personal joy to just interact with each one of you who has been sort of coordinating. So thank you once again, and we move into the session. I will just open my slide deck. So once you are able to see my slide, if anyone can just acknowledge it, that would be really helpful so that I know that you are able to see my slides. Are you able to see my slides, sir? First one, well-being and self-care title. No, no. Okay, maybe we'll just wait for 10 seconds. No, yes. It is. Okay. So just for the first slide, as we move, just acknowledge if you are able to. Yes, sir. Okay. It is visible. Wonderful, sir. Thank you very much. So this is what the agenda is going to be. Why this session? What this session is not? What this session is about? First step, circle of life, and sowing seed. Now, why this session? ये हम सेशन क्यों कर रहे हैं? जैसे सर ने शुरू में बताया कि पिछले 1.5 साल का जो सिचुएशन हुआ है वो बड़ा ही यूनिक रहा है हम सभी के जीवन के लिए. And what I have found is that when I've interacted with my colleagues, when I have interacted with my mentors, when I've interacted with senior people, people holding positions of power, what came out was everyone's concerns, everyone's anxieties, everyone's thought process was almost similar. भले ही वो ऑफिस में लेट्स से एक मिडिल लेवल का मैनेजर क्यों नहीं हो या कंपनी के सीईओ क्यों नहीं हो, सभी के मन में वही चिंता थी, वही प्रश्न थे, वही क्वेश्चंस थे, वही सिनेरियो आ रहे थे. और फिर मैंने सोचा, जब मैंने अपनी जर्नी देखी और उन क्वेश्चन से अपने आप को कनेक्ट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ये सभी के साथ शेयर किया जाए तो एज अ ह्यूमन सोसाइटी, एज अ ह्यूमन बीइंग, we can all feel connected, and this could sort of provide us some kind of a succor to sort of manage this or take on this challenge. So that's why I have sort of collated some of my thoughts, which I find are very unique yet similar, and I will going to sort of interweave that with a lot of my personal experiences. Now, what this session is not, it's very important for us to know कि ये कोई एक therapy session नहीं है, ये कोई डूज एंड डोंट्स वाला सेशन नहीं है कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए. एंड माय ऑब्जेक्टिव इज नीदर टू मेक यू फील गुड नॉर टू मेक यू फील बैड. एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट एन इंस्पिरेशन और अ मोटिवेशन और अ पेप टॉक. So why I'm saying this particular thing, because it's very important for us to understand what this session is going to do to us or not going to do to us. Now, what this session is about then, if I have to really sort of reflect, I would say कि जिस तरह से खेतों में हल चलाते हैं हम और जमीन को तैयार करते हैं, सोइंग के लिए तैयार करते हैं, उसी तरह से ये एक सेशन एक हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे माइंड फील्ड में एक हल चलाने जैसा है, एक प्लॉइंग के जैसा है. सिर्फ एक जमीन तैयार करना है, उसके बाद में सीडिंग करने का काम, उसके बाद में पानी डालने का काम, सनलाइट का काम, ये आगे के बहुत ज्यादा स्टेप्स है.
But in this session, we'll just try to attain, if we can even plow our mind, even if we can make ourselves ready, that would be a great sort of, let's say, outcome for us. Now I'm showing you 3 images over here. And what does these 3 images reflect? You see a huge ship. So our life is like a huge ship. And then you see water. Now what is this water equivalent in our life? हमारे विचार, हमारे thoughts. तो अगर आप देखेंगे कि उसी पानी में शिप सेल होती है, उसी पानी में शिप सिंक भी होती है, और उसी पानी में शिप स्टक भी हो जाती है। तो उसी तरह कुछ हमारे जीवन की कहानी है। हमारे विचार हमें आगे बढ़ाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ही विचार हमें ले डूबते हैं, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम मायूस हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वी आर स्टक इन आवर लाइफ, एंड दैट अगेन इज कॉज्ड बाय आवर ओन थॉट्स. So our thoughts play a very important role, just as water plays a very significant role, both in terms of sailing, sinking, or sort of making the ship stuck. Now let's sort of get into today's session. The very first step. Now many of you who have undertaken some kind of a spiritual exercise, or who have done some kind of meditation, or who have done some kind of reflection, would realize that there are 2 aspects of any problem solving. The first is the awareness of the problem, and the second is the acceptance of the problem. Now what is awareness? किसी चीज की जानकारी रखना, ये अवेयरनेस होता है, और किसी चीज को मान लेना, उसका एक्सेप्टेंस होता है. Now why this awareness and acceptance is important? Because whether we like it or not, fortunately or unfortunately, we are all intelligent people. And with all due respect to our respective intelligence, we also know that as our intelligence helps us to move forward, this intelligence also at times plays a very, very devil's role. And that devil's role is when this intelligence actually starts fooling ourselves. हम हमारे ही दिमाग की शक्ति से अपने आप को फॉर अ बेटर वे बेवकूफ बनाने लगते हैं, कभी कभी कहानियां देने लगते हैं, राइट? बायसेस पैदा हो जाते हैं, परसेप्शंस आ जाते हैं हमारे जीवन में, और इसी सब चीजों से उठने के लिए अवेयरनेस कि ये स्थिति क्या है, ये सिचुएशन क्या है, मैं किससे जूझ रहा हूं, कैसे जूझ रहा हूं, और दूसरा उसका एक्सेप्टेंस. As I said in the beginning, many a times it has happened that people think, "Arey, I am at this position, or I have achieved this. Why am I struggling with this?" And you will realize that our achievements or our position has got nothing to do with the way the mind plays on us. So, dispassionately doing our own assessment and our own awareness, and second most important, the acceptance. बहुत बार ऐसा हो जाता है, हमें प्रॉब्लम का अवेयरनेस आ जाता है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो आज के भी सेशन में, या हम जो ये जो सेल्फ केयर का जो हम सेशन की बात कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे जैसे जैसे मैं आगे की स्लाइड्स में आपको लेके जाऊंगा कि जितना ज्यादा हमारा अवेयरनेस रहेगा, जितना ज्यादा एक्सेप्टेंस हमारा रहेगा, उतना हम सिचुएशन को ज्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे. Now, this is what the whole circle of self looks like. And here I would request, in case if you have not, please have a pen and a paper. Again, as I said, I'm not going to ask you anything, but it would be good if you can sort of jot down for yourself. Now, अगर आपने देखा तो यहाँ पे 6 aspects है: family, friends, physical intimacy, work and money, hobby, leisure and entertainment, meditation, food, sleep and exercise. और आपने देखा होगा कि मैंने फूड, स्लीप और एक्सरसाइज के ऊपर बहुत जोर दिया है, और हम उसको आज लिवरेज करेंगे, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे वेलबींग में कैसे कंट्रीब्यूट करता है. लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फैमिली, फ्रेंड्स एंड मेंटर्स से. पिछले 1.25 साल में, 1.5 साल में हम लोगों का सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और उसमें बहुत सी चीजें हुई है.
सबसे पहले तो हमें बड़ा अच्छा लगा जब ये वर्क फ्रॉम होम हुआ, हम हमारे फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बहुत लोगों को बहुत सी परेशानी आने लगी। और जब मैं ये सब चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि it is not that I am devoid of these kind of problems. Even I am grappling with these problems. Even I grapple with them on a daily basis. तो आप ये मत समझिए कि आज मैं आया हूं और आपके साथ ये सेशन कर रहा हूं तो मैं इन सब चिंताओं से, इन परेशानियों से, इन प्रॉब्लम से मुक्त हूं, ऐसा नहीं है। बट yes, there are few things that has helped me, so I thought I will share with you. So on family and friends, here is a very small exercise that I would want you to do. Here are some 4-5 questions that you can list it down for yourself. Ask yourself, what is the kind of relationship today I have with my family? And when I say family, list down each of the members. मेरे मेरे पिताजी के साथ कैसे संबंध है, मेरे माताजी के साथ कैसे हैं, मेरे वाइफ के साथ कैसे हैं, मेरे भाई के साथ कैसे हैं, मेरे बहन के साथ कैसे हैं, मेरे बच्चों के साथ कैसे हैं। आप सभी का वहां पे लिस्ट डाउन कीजिए अपने कागज पे, और जरूरी नहीं है कि अभी करना है, आप बाद में भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और सबके आगे लिखिए कि आपके रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है। जैसे कि लेट्स से मैं एक 5 आपको सिनेरियोस देता हूं, हो सकता है आप अपने हिसाब से और भी सिनेरियोस डाल सकते हैं। तो सबसे पहले वाला सिनेरियो आएगा कि I have an excellent relationship, let's say, with that member of my family. And for example, I will say, let's say, spouse. So I can say that I have phenomenal relationship. It's like love made in heaven, made for each other kind of a thing. दूसरा हो सकता है कि ठीक है, मेरे अच्छे संबंध है. My relationship is good. We talk, we spend time together, we go on holidays together, and it's a good relationship. The third could be an average situation. So what is an average situation? Occasionally we sort of talk, occasionally we catch up, जैसे होता है, भाई है वो किसी और शहर में है, बहन है किसी और शहर में है, तो साल में हम 3-4 बार कोई शादी में, कोई और फैमिली गेट टुगेदर वगैरह में मिल लेते हैं, 15-20 दिन में एक बार बात कर लेते हैं. So that's an average relationship. 4 is a poor relationship. Now what does poor relationship means? It's there. कहीं कोई मन मुटाव नहीं है, but it's there. It's not that we go out and we meet and we greet and stuff like that, but it's there. And the last stage, of course, is it's a bad relationship. We are not in talking terms, and it happens. Many a times, for whatever reason, we are not in talking terms with our siblings. We are not in talking terms maybe with our close family members. We are not in talking terms with our own children, and it does happen. So the first thing that I would want you to do as a self-reflection is list down each of your family members or name of them. And against that, you don't have to write one word, but over a period of time, reflect what is the kind of present relationship you have and what is the kind of relationship you would want to have. And this pandemic has actually given us an opportunity to reflect upon that. The second thing is about friends. बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, हमें मिलते हैं, जिनके साथ हमारी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है. And if you have those kind of friends, again, great. List it down because that's the asset. The third thing is about mentors, right? जैसे मैंने अपने लाइफ में अपना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया है, जहां पे मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बट मैं उनको रीच आउट करता हूं टाइम टू टाइम. And in last 1.5 years, what I have realized is that these mentors have played a very important role in my life. So what I also do is I keep some kind of a diary or a notebook where I capture my thoughts and then I reach out to them. प्रोफेशनल चैलेंज के लिए मैं किसी एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को रीच आउट करता हूँ, पर्सनल चैलेंज के लिए मैं किसी और सेट ऑफ मेंटर्स को रीच आउट करता हूँ. एंड द फीडबैक दैट दे हैव गिवन इन लास्ट 1.5 years have tremendously enriched me. I'm sure many of you must be doing this, but in case if you're not doing, then I would suggest you embark on this exercise. The second aspect which I want to talk about right now is about work and money. And in case of work, मैं दो चीज के ऊपर पहले तो बोलना चाहूंगा कि पिछले 1.5 साल में क्या हुआ है,
कि हमारे काम करने का तरीका बदल गया है और हमारे काम करने का जो एक माहौल था वो भी बदल गया है। अब तरीका ही देखिए, ये जो सेशन है ये एक ऐसा सेशन है जहां हमने एक रूम में बैठ के आपस में कॉन्वर्सेशन रखना चाहिए, लेकिन आज हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे बोलो या किसी तरह से कर रहे हैं। And there is a lot of impersonality that has come in. I can't see you, you can't see me, you don't know in what context I'm saying, I don't know in what context you are taking, I can't see you eye to eye, so I really do not know whether you have even understood, whether you have any doubts, right? So same thing is happening with the work. हम मीटिंग्स कर रहे हैं, हम ईमेल्स भेज रहे हैं, तो हमारा जो काम करने का तरीका है वो बदल गया है, पूरा टेक्नोलॉजी लेड हो गया है। मैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से हूं, लेकिन मैं एक चीज आपको बता सकता हूं कि जैसे बाकी सब चीजों का जीवन में प्लस और नेगेटिव है, वैसे ही टेक्नोलॉजी के हैं। टेक्नोलॉजी इज नॉट अ पेनेशिया फॉर एवरीथिंग, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लेट्स से ये टेक्नोलॉजी यूज करने में तकलीफ भी होती है। जैसे आज आम्बेकर सर, देशपांडे सर, इन लोगों ने मुझे सवेरे कॉल किया, हम लोगों ने सेटअप किया, हमको कम से कम 10-15 मिनट लग गए सिर्फ ये सेटअप करने में। तो इमेजिन कीजिए जब आप शुरू शुरू में आए होंगे इस टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने के लिए, तो कितनी दिक्कतें गई होंगी, उससे आप लोगों की एंजाइटी भी बढ़ी होगी। अब दूसरा पहलू है माहौल। अब आप देखते हैं जब हम ऑफिस में आते हैं तो हमारे जो कलीग्स हैं हम उनके साथ चाय कॉफी भी पीते हैं, कभी गपशप भी करते हैं, कभी थोड़ी सी गॉसिप भी करते हैं, और ये सब चीजें बहुत जरूरी है। ये एक माहौल बनाती है काम का। ये माहौल का कितना इंपॉर्टेंस है ये हमें 1.5 साल में पता चला। आज भी वर्ल्ड में ये सर्वे किया गया है कि कितने लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम पसंद करना चाहेंगे, ट्रैवल नहीं करना चाहेंगे, और आपको आश्चर्य होगा कि मेजॉरिटी बोलते हैं नहीं, हम ऑफिस में जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वी आर सोशल एनिमल। वर्क इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वर्क इज एन एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, work is not a fulcrum of our life, but definitely it's a part of our life and it's an extension of our life. और इसके लिए अब मैं थर्ड पार्ट पे जाता हूं वर्क का, कि हम जब काम करते हैं, मैं प्राइवेट सेक्टर से आता हूं, तो प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों को एक बड़ी एंजाइटी रहती है, अरे मेरा जॉब रहेगा या नहीं रहेगा। और मुझे पता है आज कुछ बाकी कंपनियों के भी लोग यहाँ आए हैं, एचआर मेंबर्स आए हैं, तो ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन जब हम गवर्नमेंट में रहते हैं तो आप लोगों के पास एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, लेट्स से एक जॉब सेफ्टी है। अब इस सेफ्टी को हमने कैसे लिवरेज करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, राइट? तो इसमें जो मैं एक पहलू आपको दिखाना चाहता हूं कि कहते हैं कि जब हम अपने काम में पर्पस लाते हैं, जब हमारे काम में मीनिंग लाते हैं, तो वो काम एक अलग तरीके से हो जाता है। और वो कैसे होता है, मुझे आपको एक छोटा सा एक एनेक्डोट सुनाना, एक कहानी सुनानी है। तो एक बार ऐसा होता है, बहुत पहले की बात है, राजा अपना महल बनाते रहते हैं, गांव के बाहर एक भव्य महल बना रहे हैं। तो एक आदमी वहां से गुजरता है और वहां पे कुछ मजदूर लोग काम कर रहे हैं, काफी मजदूर काम कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ को पूछता है कि भैया आप क्या कर रहे हो? तो जो मजदूर वहां पे रहते हैं वो बोलते हैं साहब हम तो ईंटें रख रहे हैं जी, यहाँ पे एक के ऊपर एक ईंटें जोड़ने का काम करते हैं, बस यही हमको आता है। कुछ और मजदूरों से पूछता है आप क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं सर हम तो यहाँ दीवार बना रहे हैं, हमको ये दीवार बनाने का काम दिया गया है। और फिर वो कुछ और मजदूरों से पूछता है कि आप क्या कर रहे हो? तो वो ये कहते हैं कि हम एक ऐसी, क्या बोल सकते हैं उसको, बिल्डिंग बना रहे हैं, या हम एक ऐसा महल बना रहे हैं जहां पे हमारे राजा साहब बैठेंगे और प्रजा के लिए, प्रजा के हित में जो डिसीजंस होंगे, जो कंसर्न्स होंगी, जो पॉलिसीज होंगी, उनको सुनेंगे। अब आप देखेंगे कि तीनों कैटेगरी के लोग वही काम कर रहे थे, लेकिन पहले वालों ने अपने काम को कैसे आइडेंटिफाई किया कि मैं सिर्फ ईंटें जोड़ने का काम कर रहा हूं। दूसरे वालों ने कैसे आइडेंटिफाई किया, थोड़े अच्छी तरीके से किया, लेकिन उसी तरह से किया कि मैं एक दीवार बना रहा हूं। लेकिन तीसरे वालों ने किया कि मैं हमारे राजा के लिए एक महल बना रहा हूं जहां पे वो प्रजा के हित में काम करेंगे। अब मैं थोड़ा सा, आज के जो हमारे ऑडियंस है, आप लोग सब पावर सेक्टर से हो, उससे मैं इस चीज को थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं। देखिए भगवान ने हमें जो 5 कोर यूटिलिटीज दी है, एयर, वाटर, स्काई, फायर, अर्थ, राइट?
उसमें से these were the, let's say, utilities given by God, जिसको हम पंच तत्व कहते हैं, भगवान बोलो, नेचर बोलो, प्रकृति बोलो, जो आपको बोलना है। अब इसमें से हम इंसानों ने एक बहुत ही बढ़िया यूटिलिटी का इन्वेंशन किया, जिसको हम पावर कहते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, राइट? जिस इंडस्ट्री से आप सब लोग जुड़े हो। अब आप देखिए, जब ऑफिस में कोई काम कर रहा है, लेट्स से मैं एक प्यून हूं और मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं, कमीशन के ऑफिस में काम कर रहा हूं, और मुझे पूछा जाए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोलूंगा साहब मैं क्या करता हूं, मैं तो बस इधर से उधर फाइल ले जाने का काम करता हूं। कोई डायरेक्टर लेवल के रहेंगे, वो बोलेंगे आप क्या काम कर रहे हो जी? साहब ये मुझे ड्राफ्ट दिया गया है, रेगुलेशन दिया गया है, इसके ऊपर मैं अपने नोटिंग्स करता हूं जी। लेकिन अगर हम सबसे पूछा जाए कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमारा एक ही उत्तर आएगा कि हम देश को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। What is the power of power? Only the powerful people like each one of you can understand. And that is what I actually wanted to convey through this particular thought, that we are not someone who are just moving files from one desk to another. We are not an ordinary, let's say, an office boy who is just serving tea. Each one of us, we come together and we help millions and millions of people of this country by empowering their life through one of the most creative utility that mankind has given to another mankind, and that is power. Friends, senior members, just as God gives us life, but it is the doctor who sort of increases or enhances our life. Similarly, I believe while God has given us those core utilities, it is we human beings who help other human beings through this wonderful utility called power. So from today onwards, if we all connect ourselves with that, that my role is to empower my fellow human beings by this wonderful utility called power. And if everyone from top to bottom is able to have that feeling, that cultivation of that feeling internally, trust me, the way we look at our work is going to be completely different. However, there is just one point that I want to sort of highlight, that many a times it has also been found that many of us, we identify ourselves with work, right? हमारे पूरे जीवन का मकसद, मैं कौन हूं जी, मैं फला फला, मुझे पूछा जाएगा आप कौन हो, मैं इस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हूं जी, मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूं जी, मैं इस कंपनी का सीईओ हूं जी। वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। While work shapes us and we shape the work back, but senior members and friends, I just want to highlight one thing. Please do not identify yourself with work. Don't make work the only thing that you understand in life. Because when that happens, then it becomes very, very challenging. Because when we retire or when we move on, or in a pandemic situation where we are not able to meet with our colleagues, when we are not able to talk to our colleagues, we feel that our lives have been completely disrupted, right? So, three things. One, work is very important for our lives. It shapes us, and we in turn shape work. Second, we need to find purpose and meaning in our work that we do, because work is very therapeutic. But at the same time, let us not make work the fulcrum of our life, right? At the same time, I just want to add two more points, that money plays a very important role. Money gives us means to satisfy our needs and wants. But let me also tell you, money gives us a sense of achievement, sense of satisfaction. और जैसे हमारे, let's say, scriptures में कहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, right? These are the four purusharthas. So earth is a purushartha that we all need to strive. We all need to take pride in the money that we earn through our righteous means. So money is very important, work is very important, but let us not identify ourselves only with money and work. There is another element of physical intimacy. With all due respect, I am not a sexologist, I am not an expert in this field, but I truly believe that physical intimacy plays a very important role in our lives. And in last 1.5 years, a lot of people have gone through these challenges. Let's say a spouse is in office or the another person is only at home. How do you sort of take this particular relationship forward? It has been very, very challenging. So appreciate that, understand that. As I said, be aware of it, that yes, this is very important in our life.
and it has also been very challenging for us. Now I'll come to this particular section of hobby, leisure, and entertainment. And again, I want to sort of share 2 or 3 questions with you. The questions are, just as I said, that work should not become our identity. Similarly, I would want to share that if you have hobbies and leisure and entertainment, it's a positive distraction, right? It sort of takes away the element of addiction that many of us we end up with either through work or through some other means. Now, how does each of these elements contribute from a psychoneuroimmunology? This is a very interesting field. If anyone is interested, they should spend some time. Psycho is psychology, neuro is about the brain structure, and immunology is about our immune system and our endocrine system. So the way we think, how does it alters our structure, and what is the impact of that on our immunity is a phenomenal field, and I have had little bit of understanding and study in this particular area. And it says the way you cultivate your hobbies, the way you go out for your leisure activities, the way you go out for entertainment, certain chemicals like dopamine are being generated, and it helps you to relax, which we will see in subsequent slide. Now, meditation. Uh, One thing which I want to highlight is, this is again from my experience, meditation in itself will not make you happy. And I repeat, and I stand with my statement, meditation in itself will not make you happy, but meditation will create a mind that will lead to happiness. And there are 2 different things. हम बहुत बार let's say meditation course में जाते हैं, whether it is vipassana, whether I have been a vipassana practitioner, but never mind, you can follow your own methodology. And we go for these retreats, we feel very good, and we come back, and again we are back to our own world, and then we are seeking happiness, and we don't find happiness. Why? Because meditation is not supposed to lead to happiness. What meditation is supposed to lead to is cultivate awareness and cultivate equanimity, and one has to work upon oneself in a very, very diligent manner to sort of cultivate awareness and equanimity, right? We will do a small exercise right now. As I said, I have done vipassana, but I am not a vipassana sorry, I'm not a vipassana teacher. But in vipassana, there is a technique called anapana, and many of you would know that anyone can practice anapana. So what we will do is, for just next 2 to 3 minutes, not more than that, I request all of you to close your eyes and just observe your breathing, the breath coming in and the breath going out. We don't have to modulate it. We don't have to change it. We don't have to do pranayam. We don't have to press one nostril and exhale from another nostril. Nothing. Wherever you are, the way you are, just close your eyes and observe your breathing. Close your mouth also and try and breathe only from your nostrils, and just observe the breath coming in and the breath going out. We'll just try and do it for, let's say, 1 minute to 1.5 minutes. Let's start now. Close your eyes, close your mouth, and just observe your breath. The breath going inside through your nostrils, you are inhaling, and you are exhaling it. Just observe the natural, normal breath. Well, thank you. I just wanted
every one of you to start with this exercise so that later on you can do it. Any one of you interested can search for Anapana meditation by SN Goenka. There are 10 minutes videos, 20 minutes video. Again, please do not do Vipassana. For that, you need to go for 10 days course. But Anapana, you can do it. Any other meditation technique also that you do, please do that as well. Now we come to the last part, which is food, sleep, and exercise. And we will do some exercises today also as part of this session. But I want to focus upon this particular aspect. Now, friends, what I want to share with you is that food, sleep, and exercise has the most profound impact when our lives are disrupted. If you want to bring your life in order, if you want to have good relationship with yourself, if you want to have good relationship with your family, with your friends, if you want to have good relationship with your colleague, focus on this particular aspect, which is food, sleep, and exercise. और इसमें हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना है. हमें अपनी एक रूटीन और एक अपना एक रिपीटिशन इस्टेब्लिश करना है. तो रूटीन क्या होती है? सिंपल. मैं रात को 10 बजे सोऊंगा, मैं रात को 9 बजे सोऊंगा, मैं रात को 11 बजे सोऊंगा, whatever it is. Late nights are not suggested. So by 10:30, if you can figure out to go to bed, and if you can figure out a time to get up in the morning, so that's the first thing. Bring a routine in your sleep. The second thing is bring a routine in your food eating habits and time. बहुत बार ऐसा होता है, हम रात को नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेजॉन प्राइम देख रहे हैं, और हम पॉपकॉर्न खा रहे हैं, और हम चिप्स खा रहे हैं. Those are the things which sort of lead to lot of unhealthiness. And the third thing is exercise. Now, all these three things, food, sleep, and exercise, they actually go hand in hand. और कैसे होता है? अगर आपने आपका स्लीप का रूटीन स्टेबलाइज कर दिया, तो आप देखेंगे आप अनवांटेड आवर्स पे आप ईटिंग नहीं करोगे. अगर आप 10 साढ़े 10 बजे सो रहे हैं, तो आप फिर रात को आपको 12 बजे, साढ़े 11 बजे भूख नहीं लगेगी, एंड यू विल अवॉइड ऑल दैट जंक फूड दैट वी सॉर्ट ऑफ gobble upon or eat upon. And thirdly, if our sleeping time is fixed and if our getting time is or waking time is fixed, then we are able to sort of build the practice of exercise. And in today's session, I am going to give you a very simple mechanism. It is not a silver bullet or something like that, but with just 30 seconds or 3 minutes, how we can imbibe this micro habit in our lives. We will do that as we move forward. So these are the 6 elements. These are the circle of life. We have touched upon that. Now, how this circle of life impacts each and every chemical that is being generated in our body is listed over here. So these are the 4 chemicals: dopamine, oxytocin, endorphin, and serotonin, right? And what is the role of each of these chemicals? It's being listed over there. And you would see how friends and family, how playing with pets, how exercising, how meditation, how food and work, they help in sort of secreting these chemicals, and how these chemicals then sort of contribute in our well-being. This is the core that I really wanted to talk about. If all of us can understand this, you will see that if you put your sleeping habit in place, if you put your eating habit in place, if you put your exercising habit in place, suddenly you will feel a transformation. But why that transformation has happened in yourself? It's not a magic. ये कहीं जादू के कारण नहीं हुआ है, क्योंकि ये केमिकल्स हमारे शरीर में सिक्रीट होने बढ़ गए हैं, और इनके सिक्रीशन के कारण हमें जो अच्छा लगने लगा है, हमारा जो पॉजिटिव मूड है, वो होने लगता है, राइट? सो इफ यू एक्चुअली रियली लुक एट, इट्स लाइक एन एल्गोरिथम. या आप लोग जैसे पावर सेक्टर में जिस तरह से आपने क्वालिटी ऑफ पावर जनरेट किया, जिस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, वैसे ही आपके एंड यूजर को मिलेगा, राइट? उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. जिस तरह का इनपुट रहेगा, उसी तरह का आउटपुट रहेगा. So this is what I actually wanted to highlight, that when we focus on each of these aspects of our life, but more focus on food, sleep, and exercise, you will see a phenomenal change that
you can experience for yourself. And what we will do is in next couple of slides, now we will move to the last part of this particular session, where we will actually sort of embark on the journey of putting some of these mechanisms in our own life, so that we can lead a much more life of well-being and self-care. But before that, here are some list of books. If you are interested, you can read them. Food Rules is a very small book by Michael Pollan. उसका बहुत ही सिंपल फंडा है कि any food which is packed, processed and preserved, 3 P's should be avoided. Any food, right? और बहुत सारे फूड है, उसके ऊपर आपको लिखा रहेगा this is a super food, this is a super diet, but if it is either packed or processed or preserved, the best is to avoid. That's what Michael Pollan, he's a great authority. Man's Search for Meaning, very amazing book. It talks about when we find meaning and purpose in our lives, how that empowers us. And I would like to talk about this book, Lincoln's Melancholy. शायद बहुत लोगों को पता होगा कि Abraham Lincoln जो थे, he was a perennially depressed person. Very, very surprising. Perennially he was depressed. Rather, it's called melancholy. But the way he managed himself in that depression, his depression and his work was like a DNA double helix. Both sort of, overlapping each other. It's another phenomenal book which I would urge you to sort of read. Flow, many of you might have read. It tells basically that when you enjoy the work, वो जो तीसरे कैटेगरी के जो वर्कर थे जिन्होंने बोला कि हम ये एक राजा का महल बना रहे हैं ताकि राजा एक अच्छी पॉलिसी ले सके, एक अच्छा निर्णय ले सके, हम जब हमारे काम में इतने ज्यादा बोलते ना मदमस्त हो जाते हैं, we experience this flow. And Jonathan Livingstone Seagull and Prophet are another great books. These are some of the books that have inspired me. There is another book called Buddha by Siddhartha by Hermann Hesse. So Man's Search for Meaning, Jonathan Livingstone Seagull, Prophet, and Siddhartha by Hermann Hesse are 4 books which have been very, very transformational for me, besides some of the other books. And I would request all of you, and these are very, very Food Rules, Jonathan Livingstone, Prophet, Man's Search for Meaning. These are hardly 120, 140 pages book, nothing more than that, right? Great. So now we come to the last part. Before we open to the question answer, sowing the seed. Now, if you see in my earlier slide, I have focused upon food, sleep, and exercise. And if there is one takeaway from this session, if there is one thing that I would pray, I would request, I would urge that each one of you should imbibe in your lives, each one of you should make this small change in your life, which is going to have a profound, profound impact. That is about food, sleep, and exercise. And for that, we will start with something called exercise. Now, this is a very simple mantra. हम बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा, मैं वॉकिंग जाऊंगा, और हम जाते भी हैं. 2 दिन जाते हैं, 3 दिन जाते हैं, 20 मिनट के लिए जाते हैं, 25 मिनट के लिए जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है. ऑफिस में आके सबको बोलते हैं हाँ आज मैंने एक्सरसाइज करना चालू किया, और 3-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद फिर से वो ठंडे बस्ते में चले जाती है. लेकिन अगर हमें ये एक्सरसाइज हमारे लाइफ में डालना है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताऊंगा. सबसे पहले आप कोई भी एक एक्सरसाइज चूज कीजिए, और आज हम करेंगे, हम यहाँ सबके साथ में वो करने वाले हैं. तो कोई भी एक एक्सरसाइज, जैसे स्क्वाट्स है जिसको उठक बैठक बोलते हैं, वो ले लीजिए, या पुशअप ले लीजिए, राइट, या सूर्य नमस्कार अगर आपको आता है तो. लेकिन सबसे पहले हम लेट्स से सिंपल एक्सरसाइज उठक बैठक की बात कर लेंगे, स्क्वाट्स की बात कर लेंगे. अगर आप लोगों को किसी को नीज का प्रॉब्लम नहीं है, स्पाइन का प्रॉब्लम नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जैसे ही हम प्रैक्टिकल इसमें आएंगे, आप प्लीज अपने अपने चेयर से उठ के ये चीज जरूर करिएगा. तो सबसे पहले आपको एक एक्सरसाइज चूज करना है. दूसरा, आपको उसके रिपीटिशन चूज करना है. इसका मतलब क्या होता है कि मैं दिन में ये कितने बार करूंगा या करूंगी, और आप बहुत ही छोटे नंबर से स्टार्ट कीजिए. जैसे मैंने अपने वाइफ को बोला कि आप सिर्फ 3 स्क्वाट्स कीजिए रोज, सिर्फ 3 या सिर्फ 5, जितना आपसे बन सके. और मुद्दे की बात यह है कि आपको ये अननेसेसरली बढ़ाना नहीं है.
आज आपने 3 किए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपने 3 किए और आपको बड़ा अच्छा लगा और आप बोलते चलो मैं ये 3 के 5 कर लेता हूं। नहीं, कम से कम 3 हफ्ते, minimum for 3 weeks, pick up one exercise, decide a very simple quantity of repetition, 3 or 4 or 5, whatever you are comfortable with, and just do that on a daily basis at a particular time slot. What does that mean? आप एक टाइम स्लॉट चूज कीजिए। बहुत बार हम बोलते हैं नहीं मैं सवेरे कर लूंगा, मैं शाम को कर लूंगी, मैं सवेरे करूंगा, मैं शाम को करूंगी, और वो सवेरे शाम की पिंग पोंग में कभी नहीं हो पाता है। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं सवेरे 6 से 7 या शाम को 7 से 8, जो भी आपको टाइम है, लेकिन आपको उस टाइम के दरमियान ये करना ही है। एंड लास्टली, यू हैव टू डू इट विद डिसिप्लिन। तो बिल्कुल 3 चीजें 4 चीजें करनी है। एक, एक्सरसाइज चूज करना है। दूसरा, उसका रिपीटिशन कितने करने हैं वो आपको डिसाइड करने हैं। तीसरा, आपको टाइम स्लॉट करना है। और चौथा, आपको डिसिप्लिन के साथ ये रोज करना है। राइट? और ये क्यों करना है? अगर आप देखेंगे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम शरीर का एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम हमारे दिमाग का एक्सरसाइज करते हैं। वी एक्चुअली ट्रेन आवर माइंड दैट हे माइंड, you mind, please get up and exercise every day. So as Thomas Edison said, life is all about 99% perspiration and 1% inspiration, right? So what we have to cultivate is a discipline of exercising every day, right? So now what we will do is, before we move on to the next slide, I request all of you, please get up from your chair, decide whatever exercise that you want to choose for yourself. I have chosen for myself squats, and I am going to do 5 squats. So I am also going to get up from my chair. I'm going to step aside. Let me see if I can switch on my camera, right? Okay. अब मैं अपना कैमरा ऑन कर रहा हूं। So I am going to get up from my chair and I am going to do 5 squats. I request all of you to please get up from your chair. Even if you want to do 2 squats, do it, no problem. But please get up from your chair and do this particular exercise. So once I am done 5 squats, I will come back. As a proof, I will do it in front of you only. So I'm hoping and assuming every one of you have also got up, and we will just do 3, 4, 2, whatever you are comfortable with. So let's start. So I have done my 5 squats. I am hoping and assuming that all of you would have got up and you would have done your exercises. So now we will sort of resume with our presentation and just 1 or 2 slides, and then we are done. Just acknowledge once if you are able to see my slide now. You are able to? Okay, yeah. Sir. Now, अब मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल चीज बताना चाहता हूं। अब आप सोचोगे कि के आपने हमको बोले कि रोज 3 स्क्वाट करने हैं, ठीक है? तो ये 3 स्क्वाट से क्या होगा? वेल, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये 3 स्क्वाट से क्या नहीं होगा। आपकी बॉडी, आपका शरीर जॉन अब्राहम जैसा नहीं बनेगा, आपका शरीर सलमान खान जैसा नहीं बनेगा, आपका शरीर मलाइका अरोरा जैसा नहीं बनेगा, आपका शरीर कैटरीना कैफ जैसा नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। लेकिन जब आप रोज 3 स्क्वाट्स करेंगे और अज्यूम कीजिए कि आप साल के 365 में से 300 दिन करते हैं, तो आप साल में करीब करीब 900 स्क्वाट्स करेंगे, राइट? और 900 स्क्वाट्स करने के बाद, और इस चीज को ध्यान से सुनिएगा,
कि जो कृष्ण कुमार जिसने 900 स्क्वाट्स किए हैं एक साल में, उसके थाई मसल्स, उसकी स्पाइन, उसके नीस का जो स्ट्रेंथ है, वो उस कृष्ण कुमार के नीस के स्ट्रेंथ से जरूर ज्यादा रहेगा जिसने 900 स्क्वाट साल में नहीं किए हैं. Again, I am repeating, friends, with 900 squats, you may not be able to build a body like a John Abraham or a Katrina Kaif, but with 900 squats, your knees are going to be far more powerful, far more strengthful than what it was a year ago. And this particular thing is highlighted by this particular equation. 1 to the power of 365 is 1, but 1.01 to the power of 365 is 37.7. That's the power of compounding. That's the power of doing something on a continuous, consistent and constant basis. तो ये जो चीज हमने आज जो इम्बाइब की है अपने लाइफ के लिए कि मैं सिर्फ यही एक्सरसाइज करूंगा. और आप प्लीज चिंता मत कीजिए. अरे बहुत बार क्या होता है, लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद बड़े उत्साहित हो जाते हैं और फिर उसमें थोड़े से रिपीटिशंस बढ़ा लेते हैं. आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने अपने लिए सिर्फ 7 स्क्वाट से स्टार्ट किया. मैं 3 महीने तक सिर्फ 7 स्क्वाट्स करता रहा. उसके बाद में जब एक बार दिमाग को लत लग जाती है एक्सरसाइज करने की, 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप खुद देखेंगे कि आपका दिमाग अपने आप अब रिपीटिशंस भी बढ़ा रहा है और नंबर ऑफ एक्सरसाइज या टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज भी ऐड कर रहा है. लेकिन जब तक वो नहीं होता है, मेरी सबसे गुजारिश है, आपको ये लगेगा ये क्या फॉर्मूला है, ये 2 एक्सरसाइज और 3 एक्सरसाइज से क्या मेरा जीवन बदल जाएगा? आप करके देखिए. 2 महीने 3 महीने तक सिर्फ उतना ही मिनिमम रिपीटिशन कीजिए और फिर बाद में देखिए कि ये कैसे आपके जीवन में ये एस्पेक्ट परिवर्तन लाता है. So now we come to the last 2 slides and we'll open to the Q&A. We are almost on time as well. When you do all these things, friends, I just want to urge one thing to you. Please be nice to yourself. Please be kind to yourself because lifestyle change is very, very difficult. मैंने आपको शुरू में एक जहाज बताया कि कैसे पानी से जहाज आगे जाता है, वही पानी में जहाज सिंक हो जाता है, वही पानी में जहाज स्टक हो जाता है. तो मैं फिर से वो शिप का एनालॉजी आपको दूंगा और ये बताऊंगा कि हमारा जो जीवन है, ये एक बहुत बड़ा जो एक कंटेनर की जो शिप होती है, ये उसकी तरह होता है, not like a speedboat. And once Barack Obama, former president of US, he made a very interesting statement. He said life or governments or big institutions are those container liners. You can't change direction just like that here and there like a speedboat, right? It takes a lot of time, it takes a lot of effort to change the direction. But when the direction gets changed, you see a phenomenal transformation. So friends, आज के बाद जब आप ये चीज स्टार्ट करोगे, प्लीज बी काइंड. ऐसा नहीं होगा कि आपने ये सेशन सुना मेरा और आप कल एकदम मोटिवेट होंगे, कल से आप एकदम खुश रहने लग जाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. आपको आपके रिलेशंस पे रिफ्लेक्ट करना है, आपको आपके रिलेशंस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा. हो सकता है शुरू में आप अपने तरफ से बहुत एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन सामने वाले को वो परिवर्तन नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है वो आपको पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे. बट इफ यू कीप रिफ्लेक्टिंग ऑन योरसेल्फ, if you are aware about yourself and if you accept yourself and you are ready to bring this small change in a consistent basis by being kind and nice to yourself and not pushing yourself unnecessarily, definitely you will see a change in yourself. And with that, we close with this lovely and the beautiful prayer which says Om Sarve Bhantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukha Bhago Bhavate. What does this mean? Let everyone be healthy. Let everyone be happy. No one ever be miserable so that we can all experience bliss. And with that, I bring my session to an end. What we will do now is we'll open for the Q&A. Anyone who has got any thoughts, any observations, any feedback, please feel free to share. I'm sure some of the questions that I have given you, you might have thought about them. These are just the initial points. You can have your own questions. If you wish to, you can also write to me.
You can also reach out to me on mobile, but just give a reference that you heard me at MERC, so that I'll be able to sort of reply back to you. So with that, I close my session. Thank you once again, Commission. Thank you once again, senior members. Thank you once again for coordinating this session for me. I'm extremely grateful to each one of you, and we open this for Q&A now. Feel free to whatever you want to ask, whatever observations you have. I'll be more than whatever I can share from my experience. I'll be more than happy to share. Do you think about the role of sattvic food? Right, sir. Does it affect our happiness, overall happiness? Very much, sir. Very much, sir. Rather, I believe Lord Krishna in Bhagavad Gita says the quality of the food, the preparation of the food, the way it has even been prepared, it has a significant impact on our mindset. And माइंड तो जाने दीजिए सर, मैं छोटा सा, चूंकि आपने ये प्रश्न पूछा है, हम जब मुंबई के रोड साइड की चाट खा के आते हैं तो 2 दिन तक पेट हमें बताता रहता है कि आपने रोड की चाट खाई है, लेकिन जब हम घर का खाना खाते हैं तो कभी वो पता नहीं चलता है. तो माइंड तो दूर की बात सर, इवन बॉडी लेवल पे इतना ज्यादा प्रभाव है, तो माइंड लेवल पे तो होना ही है, क्योंकि वो तो इनपुट है. एयर, वाटर, फूड इज एन इनपुट फॉर आवर बॉडी. So the way the input is going to be, वो कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी. This is what my grandmother used to say. So sattvic food has a great role to play in our lives, sir. Any book you can suggest about sattvic food, some good recipe? Sir, right away I don't have, but what I would do is I'll definitely ping you. But my recommendations are Food Rules by Michael Pollan, which I have mentioned. It's a very interesting book. It was very transformative. कि Western thinkers actually देखा जाए सर तो Indian philosophy को लेके बात करते हैं. And with your permission, sir, I want to quote example of David Henry Thoreau, जिन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है वॉल्डन, और महात्मा गांधी जी ने अपने गुरु मानते थे. तो डेविड हेनरी थोरो, ही यूज्ड टू लिव इन अ फॉरेस्ट. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वहां पे कहीं वो फॉरेस्ट में रहते थे, सोसाइटी से बाहर रहते थे, एंड हिज लाइफ वाज कंप्लीटली सात्विक. उन्होंने अपनी किताब में सर ये लिखा है, और मुझे तो रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं ये बोल भी रहा हूं आपसे सर, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुटिया के बाहर जो छोटा सा पानी का जो कुंड है, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश आके स्नान कर रहे हैं, और सभी देवी देव, ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, डेविड हेनरी थोरो. सो द पॉइंट इज नॉट whether Jesus came or Lord Krishna came. The point is what is the kind of feeling one had, right? और वो जो आंतरिक भावना और भाव है, मेरे ख्याल से आपने जो पॉइंट बोला सर, एक सात्विक खाने से और सात्विक विचारों से और सात्विक सत्संग से बहुत आता है सर. Now, within non-processed food or non-packed food, will you recommend the natural food, naturally grown food, permaculturally grown food, organic food? Again, sir, personally, I have not embarked on the journey of organic food, but there is a friend of mine in Chennai who is also my mentor. He actually has a shop, and just not as a business, but even at a personal level, वो होटल का खाना नहीं खाते हैं सर. वो घर में भी चूल्हे पे बना हुआ और मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना खाता है, वो मेरा जो दोस्त है. हालांकि मेरी भाभी को और उसकी पत्नी को काफी दिक्कत होती है, बट he and I have seen his journey. जिस तरह से उसके विचार जो पहले थे और अब थे, उसमें काफी फर्क है. तो अगेन यस, if we can afford nothing like it, बट मेरा एक ऐसा मानना रहेगा सर कि इस जर्नी में हम कम से कम अगर हम घर के खाने से स्टार्ट कर लें
और पिछले 1 सवा साल में शायद ये बहुत ज्यादा हुआ है कि हम सब लोगों ने घर में अलग अलग तरीके का फूड एक्सपेरिमेंट किया है। तो मेरा तो ये मानना है सर कि अगर हम रोज फ्रेश घर की रोटी, चपाती, दाल, सब्जी इसी से अगर हम स्टार्ट कर लें तो शायद बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है सर। और जैसा आपने सजेस्ट किया सर, अगर हम ऑर्गेनिक को एम्बाइब कर सके तो ऑब्वियसली इट विल फर्दर हेल्प सर। चारों तरफ देखते हुए ऐसा लगता है कि एक जमाना था कि इंडिया का जो सिस्टम था, जैसे कि सत्यमेव जयते, फिर बाद में एहसास हुआ कि उसके साथ में अर्थमेव जयते भी उतना ही जरूरी है, और थोड़ा आगे जाने के बाद में पता चला कि उसके साथ में बलमेव जयते भी जरूरी है। लेकिन आज की तारीख में और आपकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि विदाउट हास्यमेव जयते योर लाइफ इज नॉट इजी। तंदुरुस्त रहना है, फिट रहना है, अच्छी टिप्स आपने दिए हैं। But how do you integrate it with the growth of economy? I mean, if everyone starts growing Sattvic, the demand will be shrinking, but you want more demand to be generated for the national economy in terms of GDP growth and all. Because you can grow only at the dead bodies of the people or the poisoned body of the people. सर आपने जो प्रश्न पूछा या ऑब्जर्वेशन दिया है उसके लिए मैं एक रिसेंटली मैंने एक पोस्ट पढ़ा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पोस्ट ऐसा है सर कि अ साइक्लिस्ट जो साइकिल चलाता है, ही इज वेरी डेंजरस टू द इकोनॉमी, ही इज वेरी डेंजरस टू द जीडीपी। और शायद काफी लोगों ने पढ़ा होगा ये पोस्ट कि जो साइकिल चलाता है वो हेल्दी रहता है, वो हेल्दी फूड खाता है, क्योंकि आप हेल्दी रहोगे तो सर आप हेल्दी फूड भी खाओगे। सो इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। फिर दवा इंडस्ट्री का क्या होगा, दवाई का क्या होगा, जिम इंडस्ट्री का क्या होगा, राइट। तो बड़े ह्यूमरस वे में उसने ये पोस्ट लिखी। लेकिन सर मैं यहाँ पे जेआरडी टाटा साहब को कोट करना चाहूंगा सर। जेआरडी टाटा साहब के सर 2 इंसिडेंट्स हैं और ये दोनों इंसिडेंट्स हमें जानना बहुत जरूरी है इस प्रश्न को या इस थॉट को शायद थोड़ा समझने के लिए। तो एक बार जब जेआरडी टाटा साहब नेहरू जी से मिले तो नेहरू जी ने उनसे कहा था, मिस्टर टाटा, डोंट अटर दैट डर्टी वर्ड पॉलिटिक्स इन प्रॉफिट इन फ्रंट ऑफ मी। शायद हमने ये पढ़ा होगा। प्रॉफिट बड़ा ही डर्टी वर्ड है, गंदा सा शब्द है। गंदा मतलब मुझे प्रॉफिट से मुझे अच्छा नहीं लगता, घिन आती है जब आप प्रॉफिट की बात करते हो। इमेजिन ही इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, ही इज अ बिजनेसमैन, एंड दैट इज व्हाट पंडित नेहरू जी said to him. But, and the second incident which I want to share with you, sir, is when GRD Tata was once asked, what is your vision for India? Do you want to see India as a developed country, and by when? And you know, the answer that he replied was such a stunning and a shocking reply, and it is there documented, sir. Not many of them would know. He said, more than developed country, I want India and Indians to be a happy country. Correct. एंड सर इमेजिन करिए, एक बिजनेसमैन है जो प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन जब उससे पूछा गया, उसने जीडीपी की बात नहीं करी, उन्होंने एकदम डेवलप्ड होने की बात नहीं करी, उन्होंने हैप्पीनेस की बात करी सर। तो सर मुझे ऐसा लगता है जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसमें सर अर्थ भी है और काम है। धर्म और मोक्ष के साथ में अर्थ और काम, ये सिर्फ एक मैं अपने हिंदुइज्म की बात नहीं करूंगा, ये एक फिलॉसफी है, कॉन्सेप्ट है कि ये चारों चीजें आपको चाहिए। आप अर्थ के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। वर्क गिव्स अस जॉय, एंड आई वांट टू कोट Khalil Gibran from Prophet, and this was a very transformating statement for me. He says, if you cannot work with joy but with distaste, it is better to beg alms from those who work with joy. तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमें घर में बैठ जाना चाहिए? क्या हमें आलस हो जाना चाहिए? नहीं, हमें श्रम करना है, परिश्रम करना है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में करना है सर, किस तरह से करना है, किस लोगों के साथ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है सर। So we will have to formulate a formula where happiness and the human resource quality are integrated with the classical economic definition of
GDP or profit or development. Correct? Absolutely, sir. Absolutely. Rather, one more thing I want to share. I think Matsushita, he wrote in the name of his book also is Not for Bread Alone. Companies, industries, society is not just merely for profit, sir. तो आप जो बात बोल रहे हो सर ये बिल्कुल सही है और वॉरेन बफेट साहब ने भी यही बात की है. अगर आप चाहो तो सर मैं उनका एक पूरा टॉक है मैं शेयर करूंगा. उनमें उन्होंने कहा है कि 1980s तक this concept that organizations or companies exist for only shareholders was not there even in America, sir. यूरोप में तो आज भी नहीं है. Shareholders are one of the stakeholders, but profit being the sole motive of companies was never there as a concept. सर ये तो पिछले अनफॉर्चुनेटली हमारे जमाने में हम जैसे लोग MBA पढ़ के ये ले आए हैं, बट सर आप जैसे लोगों ने तो बहुत ही होलिस्टिक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है लाइफ को दिया है सर. और आपका वो कंपाउंडिंग के बारे में जो विचार था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. वो सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में नहीं है, अपने म्यूचुअल फंड के बारे में भी रहता है. कंपाउंडिंग. सर मुझे ऐसा लगता है कुछ दो मैसेज आए हैं शिवाजी साहब की तरफ से और आनंद साहब की तरफ से, तो हम उनका प्रश्न ले लें क्या सर? ले लीजिए, बिल्कुल लीजिए. मैं तो बहुत से प्रश्न नहीं आ रहे थे इसलिए मैं थोड़ा सा आनंद सर आपका क्या प्रश्न है प्लीज आप शेयर करेंगे. आनंद MSPGCL. जी सर. कौन सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक. हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है सर. हाँ. I have listening since beginning of the session, and it is a very great pleasure to me. And you have enlightened us on various issues like sowing seeds or sheep का जो story है, जहाज और अपना जीवन, ये कैसे हम अपने जीवन में उसको relate कर सकते हैं. Plus hobbies, relaxation and another is entertainment and other aspects also, how to live life. Also you have talked about the story of building mahal. This also shows the how different attitude of individual with the same incidents, and what should be the our approach to the वर्क. बहुत ही बढ़िया ये एनलाइटन हो गया, मजा आ गया उसको सुनने में. वेरी ट्रू लर्निंग्स. ऑल्सो सर आपने बताया है कि हम हमेशा नेम एंड फेम या तो वर्क और मनी, whenever we give our identification, we used to use our designation or our workplace name and something like that, and as soon as we get retired, we wander here and there, and story starts from there. If we learn from right now as a human being, then the life will be very easy to live in this present scenario. बहुत ही बढ़िया. Very nice, sir. I'm really happy, and my company also, my management, I would like to thank my management and MERC and Bodare madam to give opportunity to hear you. Very nice, very nice. Thank you very much. Thank you very much, sir. Honor, sir, to hear this from you. शिवाजी साहब आपका प्रश्न है, आपने भी हाथ उठाया. कुछ प्रश्न है सर आपके या ऑब्जर्वेशन है? Yes, sir. I have a question to ask. Yes, sir. You have mainly focused on self-well-being and self-care, and how we motivate ourselves and look after ourselves. That's a learning point. I just wanted to ask a question. You talked about those 4 chemicals which lead to our happiness and well-being. As a management or as a HR, how do I generate such kind of chemicals in my own employees? What methods do you suggest? Like what activities or methods you suggest for my own company or the people as such, my own people? Right, sir.
सर सबसे पहले आपने ये प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन मैं फिर भी उसको एक जवाब उसमें ऐड करना चाहूंगा। बहुत बार ये मुझे पूछा जाता है कि आप सेल्फ के बारे में इतना बोल रहे हो, आप बाकी लोगों को क्यों नहीं उसमें ऐड कर रहे हो। तो सर मैं उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब हम प्लेन में बैठते हैं और उसमें एक अनाउंसमेंट किया जाता है कि अगर प्लेन में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाए तो दूसरों को मास्क पहनाने से पहले खुद का पहनिए। अगर बच्चे भी बाजू में बैठे हैं तो पहले खुद का मास्क पहनिए। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि खुद का अगर आप मास्क पहनेंगे तभी आप बाजू वालों को बचा पाएंगे। आप बाजू वाले के लिए अगर पहले मास्क पहनेंगे और पता चला खुद को ऑक्सीजन कम हो गया तो आप उसको मास्क ही नहीं पहना पाएंगे। तो उसी तरह सर एक ऑब्जर्वेशन मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने ये सेल्फ केयर इसलिए बोला क्योंकि अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो हम दूसरों को कैसे खुश रख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो वो बात है। दूसरा सर आपने जो एम्प्लॉयज और अपनी टीम के बारे में बात किया सर, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जिस तरह से ये सेशन ऑर्गेनाइज किया, दिस इज कंट्रीब्यूटिंग इन द वेलबींग ऑफ योर टीम एंड योर एम्प्लॉयज। और दूसरा सर ये मेरा पर्सनल मानना है और ये भी मैंने बहुत हार्ड वे से लर्न किया है सर। कहते हैं कि एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटीज इज एम्पैथी सर। कि एम्पैथी का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाले ने अगर काम नहीं किया तो उस काम को मैं नजरअंदाज कर लूं। सिंपैथी और एम्पैथी में फर्क होता है। एम्पैथी का, सिंपैथी का मतलब अरे तू तो नहीं किया, कोई बात नहीं, चलता है, बच्चा फेल भी हो जाए, अरे कोई बात नहीं, तूने बहुत मेहनत की, हो गया। बट एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप उसके शूज में जाके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझो। तो बहुत बार अगर लेट्स से किसी ने काम नहीं किया है तो क्या हम कोशिश भी करते हैं जानने की कि क्यों नहीं हुआ। हो सकता है उसके घर में कोई परेशानी हो सकता है उसको उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं हो, या हो सकता है उसको चीजें समझ में नहीं आ रही हो, या हो सकता है वो सही में आलसी हो, राइट। तो अगर हमें ये अच्छा एक माहौल हमारे टीम के लिए बनाना है तो मुझे ऐसा लगता है सर कि सबसे पहले हमारे में एक वो एम्पैथी कल्टीवेट होना चाहिए। और वो एम्पैथी सर तभी कल्टीवेट होगी जब हम खुद से प्यार करेंगे सर। मेरे एक मेंटर है सर, उन्होंने मुझे 3 साल पहले ये फीडबैक दिया जब मैं उनके पास गया था। ही सेड के प्लीज बी काइंड टू योरसेल्फ फर्स्ट। तो हम लोगों के जीवन में एक बहुत क्या बोल सकते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रहती है। हमने लाइफ में बहुत अचीव किया है। आज ये पूरे जो सेशन में लोग आए हैं, मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान के टॉप 5% पॉपुलेशन में हो सर, टॉप 5%। ठीक है, 120 करोड़ में से 5% में से हो। हम उन लोगों में से नहीं है जिनको अपने बीवी बच्चों को मीलों पैदल चलना पड़ा एज अ माइग्रेंट वर्कर। तो वन ऑफ द थिंग्स आई वुड रिक्वेस्ट एंड शिवाजी सर का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि हमने सेल्फ फ्लॉगिंग, अपने आप को जो रोज चाबुक मारते रहते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, ये हमने बंद करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है सर ये अगर 2-3 चीज करेंगे, एम्पैथी करेंगे, सेल्फ काइंडनेस प्रैक्टिस करेंगे, तो हम दूसरों के लिए बहुत अच्छा माहौल हमारे ऑफिस में तैयार कर सकते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Any other questions, or if you want, you can always reach out to me, kk@live.in. I have given you my email address. If there are any more questions, happy to take them as well. I think Ambedkar Sahib, there are no more questions. With the permission of the commission, we can request for closing. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, Krishna Kumar, sir. It was a wonderful session. You have nicely explained the circle of life, especially relation of everyone with the family, friends, and mentors. Then importance of food and sleep. Then role of meditations, and you also share. Ambedkar Sahib, Khuller Sahib हाथ वर केला. Sorry, sir. Extremely sorry, sir. Khuller Sahib. Sorry, sir. Khuller sir want to share, sir. Sir, please, sir. Sorry, I'm sorry to start coming at a very last moment, but just I wanted to convey my personal thanks to KKG for a very insightful presentation. आपने जो बताया उससे लगता है सभी लोगों ने काफी अच्छे से ऑब्जर्व किया है। एक दो शंकाएं हैं उस प्रेजेंटेशन के ऊपर। आपने बड़े अच्छे लिटरेचर को रेफर किया है, काफी अच्छी कॉन्सेप्ट्स बताए खाने के बारे में और सात्विक जीवन के बारे में, जिससे
लाइफ एसेंशियली हैप्पी हुए, ये आपका थीम है। मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल होना भी बहुत जरूरी है, और उस स्ट्रगल से जो पेन होता है वो अपने को मजबूत बनाता है। इसलिए वो पेन को जो हैप्पीनेस के अगेंस्ट में कई उनको सैड कर देता है, कुछ वो लर्निंग देके जाता है। तो हमारा लाइफ का मकसद हैप्पी रहने के बजाय शायद समाधानी रहना ज्यादा अच्छा होता है। समाधान के अंदर मिजरी भी को चाहते हैं, और हर एक की लाइफ में कष्ट होते हैं, ये हम सबको मालूम है, चाहे वो पढ़ाई करना हो, चाहे वो जॉब के लिए भटकना हो। लेकिन जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं लाइफ में पीछे, तो आपको लगता है कि वो जो पेन हमको नियति ने दिया है, नेचर ने दिया है, डेस्टिनी ने दिया है, वो शायद हमारे भले के लिए ही था। उस टाइम पे शायद हमें महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ा और उसने हमारे लाइफ को डिफाइन किया। तो जब अपन बैठते हैं, चाहे मेडिटेशन के लिए, चाहे वो किसी के अंदर, तो हैप्पीनेस में वो जो गैजेट्स हैं या जो टेक्निक्स हैं, उसमें भी मजा है, लेकिन असली मजा वो है कि जिसमें उतनी ही हैप्पीनेस से हम लोग सभी जो है तैयार हो जाएं कि हम मिजरी भी स्वीकारें। तो ये एक मेरे को थॉट आपको ऐड करना था, हैप्पीनेस की डेफिनेशन को ब्रॉडन करना, क्योंकि हर रोज की फ्रस्ट्रेशन, चाहे वो कोविड के अंदर हुई है या इवन बगैर कोविड के भी जो चलती रहती है, उसमें काफी ज्यादा लोग परेशान होकर डिस्ट्रैक्ट होके वो दूसरी चीजों के अंदर खुशियां ढूंढते हैं, चाहे क्लब्स में जाते हैं, चाहे वो आजकल का एक फंडा है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आप जो है सभी लोग करते रहते हैं कि वो लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा। तो फेसबुक के ऊपर हैप्पी पिक्चर्स आती हैं, व्हाट्सएप के ऊपर शेयरिंग होती है। ये सब चीजों से कई बार ऐसा लगता है कि ये डिस्ट्रैक्शन जो है, जो मेरा असली वजूद है, जो स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहता। फिर ऐसी भी कई बार बात होती है कि मेरी लायकी शायद किसी एक पर्टिकुलर काम की है, ऐसा मेरा बिलीफ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उस जगह के ऊपर नहीं पहुंचा हूँ। मैं जो हूँ शायद उससे कुछ कम जगह के ऊपर हूँ। अगर सपोज मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ और मेरे को लगता है कि मेरे को जो है डायरेक्टर बन जाना चाहिए, ये मेरे थॉट और मेरा हिसाब से इस तरह से है, तो कई बार उस फ्रस्ट्रेशन में भी जो आज हाथ में काम है, उस काम के ऊपर पूरा न्याय नहीं दे पाते। आपने बोला कि काम जो है वो वर्शिप है, काम इटसेल्फ इज समथिंग जो आपको हैप्पीनेस देता है, ये बात सही है, लेकिन वो काम जो है चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें ना ऑफिस होता है ना घर होता है। ये जो काम है ये हर जगह पे जो भी कुछ आपके हाथ में है वो आपने प्रेम पूर्वक करना चाहिए। ये करने के जो तरीके हो सकते हैं उसके अंदर कैसे करें कि अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहे, और पॉजिटिव में ना भी मिले तो भी कोई नुकसान नहीं है जहाँ पर आप बैठे। अगर कोई जॉइंट डायरेक्टर है, उसको डायरेक्टर बनना है और वो डायरेक्टर बनते हुए उसके लिए एस्पिरेशन करके अपने आप को घुलता रहता है अंदर ही अंदर, लेकिन कई बार ऐसा उसको लगता नहीं है कि उसने उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, उसकी मेहनत करनी चाहिए, उसके लिए कष्ट करना चाहिए। ये थॉट्स उसको आने चाहिए, रादर देन कि वो विपसना के अंदर आना बाना के हिसाब से ऑब्जर्व करे। उसका भी अपना महत्व है, स्ट्रगल का भी उतना ही महत्व है, और इसी वजह से वो आपने जो बोला, मेडिटेशन इटसेल्फ इज नॉट एन एंड, meditation is just a tool for you to self reflect, and therefore it is you who has to form those habits which take you to your aspirations. तो ये चीज मेरे को ऐड करनी थी सिर्फ आपके, और थोड़ा लंबा खींचा, आई एम सॉरी, थोड़े मैं वर्ड्स थॉट्स को कलेक्ट कर रहा था इसलिए थोड़ा सा बाद में हाथ उठाया, दैट आल्सो आई एम सॉरी, बट आई वुड लाइक टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट। एक दूसरी पॉइंट करके फिर मैं छोड़ता हूँ। ये फूड के बारे में आपने बोला सात्विक खाना खाना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि कई बार सात्विक खाने का मतलब सिर्फ वेजिटेरियन खाने को कई बार उसका इक्वेट किया जाता है।
तो ये चीज के बारे में भी क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि सात्विक का मतलब ये होता है जो प्रेम पूर्वक बना हो, अपने तरीके से आपने इकट्ठे मिलकर बनाया हो। इसका एक उदाहरण है कि हमारे यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र जितना भी है, वहां पर आप आदिवासी जनता से जब आप बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनकी जो सेरेनिटी है, उनकी जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस है, कंटेंटमेंट है, वो आप चाहकर भी नहीं इंपोर्ट कर पाते, क्योंकि आपने अपनी लिविंग के ऊपर से इतना लर्निंग अलग तरीके से लिया हुआ है कि वो वाली लाइफ जिसमें वो अभ्यस्त हो गए हैं नेचर के साथ में रहने के लिए। जो वॉल्डन का आपने जिक्र किया, थोरो कैसे रह रहे थे, मेरा ये कहना है कि सात्विक शुड नॉट बी इक्वल टू वेजिटेरियनिज्म, जो अनफॉर्चुनेटली कई बार हमने अंधाधुंध प्रमोट किया है कई मूवमेंट्स ने। उसके ऊपर से व्हाट इज योर थिंकिंग, वीगन, vegetarian as against sattvic in the of any food, with no attachment to food, but certainly which is serving a certain purpose, and you are taking it from nature and giving it back to nature in whatever form. ये दो पॉइंट्स मेरे अगर आप बता पाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, we can have a chat later on. Thank you. Sir, very quickly I would like to add, आपके दोनों पॉइंट से मैं सहमत हूं, और आपने बहुत अच्छा मेरे लिए आज एक डेफिनेशन दिया है कि समाधानी का मतलब सिर्फ हैप्पी नहीं, लेकिन जीवन के सुख दुख से समाधान रहना। और जो विपासना में इक्वानिमिटी की बात करते हैं, आई थिंक एक नया डेफिनेशन मुझे मिला, एंड आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। स्ट्रगल डिफाइंस अ पर्सन। वो एक बहुत अच्छी एक स्कल्प्टर है सर, जो मैंने देखा कि एक आदमी है जिसके हाथ में हथौड़ी और छैनी है, और उससे वो खुद को तराशता है, राइट। तो वो खुद को जो तराशने का काम है वो मुश्किल भरा होता है। और आपने बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया सर कि डिप्यूटी डायरेक्टर से मुझे डायरेक्टर अगर बनना है और मैं उसमें सिर्फ चिंता में लगा रहूंगा तो नहीं होगा, मुझे उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और वो प्रिपरेशन और स्ट्रगल शायद पेनफुल हो, but that is part of the journey. So I completely agree. And the second part also, sir, I completely agree. Although I'm a vegetarian, I don't have eggs, but according to me, that doesn't mean that non-vegetarian food is not a sattvic food, because as a human being, I cannot define what someone should eat or not eat. But इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ सर, शबरी के बेर। हमारे शास्त्रों में, या शास्त्र तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारे कॉमन पार्लेंस में ऐसा होता है कि एक दूसरे का झूठा नहीं खाया जाता है, राइट। लेकिन भगवान ने तो शबरी के झूठे बेर खाए थे। तो अगर झूठे बेर सात्विक है तो दूसरा अनाज क्यों सात्विक नहीं हो सकता? तो आई कंप्लीटली अग्री विथ यू सर. It is not about whether it is a vegetarian or a non-vegetarian, but with what thinking that food has been prepared or made and served, that is what would define सात्विक सर. और लास्ट में सर सिर्फ एक थॉट और ऐड करूंगा सर. रिसेंटली मेरे एक जो मित्र है उन्होंने मुझे कहा था कि सादगी भरा जीवन ये नहीं होता कि आप एक कंजूस की तरह जियो, या आपको अगर लेट्स से कार की जरूरत है और आपने कार नहीं ली, और आपको कपड़ों की अच्छी जरूरत है और आपने कपड़े नहीं लिए. सादगी वो होती है जो आपके विचारों में होती है. दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं करना, दूसरों के प्रति जलन नहीं करना, दूसरों के प्रति जेलसी नहीं रखना, एंगर नहीं रखना, इसको सादगी बोलते हैं. और ना कि फटे पुराने कपड़े में जीवन को जीना, उसको सादगी बोलते हैं. तो सर thank you very much for adding those two thoughts, and I will add them in my presentation also, and you have given me a new definition of what samadhani means, sir. Really appreciate that, sir. ये कहा जाता है केके जी कि अगर आप बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपना स्ट्रगल ज्यादा नहीं करते. तो हर आदमी को अगर बिल्कुल रूटीन सेट हो गया है जी सर, तो वो न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं रहती. बिल्कुल तो सही. इसके लिए बहुत कि आपको डिस्कम्फर्ट के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए. फिर वो पर्पस मिलता है जो आपने लिखा है सेल्फ के लिए. जी सर, पर्पस चाहिए. जी तो सर. वो पर्पस जो है वो एक लार्ज पर्पस हो सकता है और वो एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हो सकता है जिसके लिए क्वेस्ट चाहिए. वो जो उस दिशा में जो कदम जाते हैं वो आपको फ्लो में लाते हैं, और वो वाली जो फ्लो है उसके अंदर जो संतुष्टि मिलती है और जो लर्निंग के लिए जो स्ट्रगल होती है वो हम सबको एस्पायर करना चाहिए. ये whether we achieve that position or not, it does not matter whether I get
whatever I am aspiring, but in the process अगर मेरी muscles अच्छी हो जाती हैं उठक बैठक करने से, मेरे को क्या करना है कि मेरे को जाके कोई बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन दिखाना है, but it is simply telling my mind that I have acquired something new. आज मेरे को ये नई लर्निंग हुई, मैंने अपना डेल्टा एक डेवलपमेंट का बढ़ाया. That's what the compounding will ultimately lead to. So discomfort एक्सेप्ट करना भी उतना ही जरूरी है. फेलियर विलिंगली एक्सेप्ट करना आजकल का ये प्रैक्टिस भी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि we should, any person who says everything is fine, that means that person is not working hard enough to come out with new ideas, new perspective, is something which needs to be inculcated when we are promoting this idea of samadhan, which is not samadhan in terms of limited demands, which you very rightly said. It is basically to grow your mind towards what purpose which allows you to flow in a manner where you are contented. So that's a supplement to what I was saying. So thank you. Perfect, sir. And for everyone, I just want to mention that today's session, इसकी जो seeding हुई थी ये मुकेश सर के कारण हुई है. I reached out to him and he was really kind enough and generous enough to sort of give a go ahead. And मेरे मन में सर सभी लोगों के साथ सिर्फ एक विचार जो आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है एक सर ने पूछा भी था कि हमने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के वेलबींग के लिए क्या करना चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है मुकेश सर के गाइडेंस में हमने एक सत्संग जरूर ऑर्गेनाइज करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, ताकि हम इस तरह के टॉपिक को बहुत ही क्या बोल सकते हैं उसको, विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी पोजीशन, विदाउट एनी हायरार्की, एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन बीइंग्स सर, राइट. हम तो बस ठीक है MERC में बोलो या किसी और कंपनी में आ जाते हैं एक प्लेटफॉर्म के लिए, बट अदरवाइज एट द बेसिक लेवल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग. सो माय प्रेयर्स एंड माय डिजायर वुड बी कि एक बार ये पेंडेमिक होता है तो मुकेश सर आपके गाइडेंस में हम एक ऐसा सत्संग रखें, और आपका भी और चेयरमैन सर का भी और बाकी सब जो रेस्पेक्टेड मेंबर्स हैं और जो पोजीशंस पे लोग हैं और जितने भी ऑफिस बियरर्स हैं, हम लोगों का अगर कलेक्टिव विजडम हम ला सके तो हम एक बहुत ही अपने जीवन को ही नहीं और हमारे वर्क प्लेस को भी एक बहुत अच्छा बना सकते हैं. मुझे ऐसा एटलीस्ट ये सेशन करके मुझे वो फीलिंग आ रही है सर. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. पर्सनली आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस सर. Thank you for coming over. Thank you, sir. Thank you very much, Krishna Kumar sir. It was a wonderful session as everybody contributed in this session. You have nicely explained the circle of life, especially relation of everyone with a friend, family and mentors, then importance of food and sleep, then role of meditation. You also share your experience and insight and why and how we take care of ourselves in all times. We are fortunate enough to have you with us for today's online session. I am sure that this will be helpful to everyone. So thank you very much once again. I must thank Honorable Commission, Secretary Sir, HR heads and representative of MSPGCL, MSCDCL, Adani Electricity, Tata Power, VST and all the participants of today's online session. Now with permission of Honorable Commission, I declare today's session is over. Thank you very much and have a nice day ahead. Thank you very much.